Welcome to our free Figma AI course, where I will teach you how to use Figma Make, Figma Sites, and Dev Mode MCP server. Every episode in this course is in English as well as in Hindi. This is episode 1, where I will be showing you how to turn your Figma designs into fully functional web apps without any coding. You will learn Figma Make step by step, and by the end of this episode, you will have your first fully functional prototype for a to-do list web app. This is your dost Ansh Mehra, and you are learning from the Cutting Edge School, a platform for businesses and professionals to learn the skills for the future. Now, to get started, you need to go to figma.com and create your account. I would recommend you watching our foundational Figma course if you've never used Figma before. Now, this playlist will help you get familiar with Figma from scratch. Figma Make and other AI features are now out of beta and are available to starter plans with a few restrictions. So without further ado, let's start with chapter number 1. Alright folks, so this is lecture number 1. Well, I'll take you through how exactly is Figma Make even working? How do you use it to create fully functional prototypes? And why do you even need to learn Figma Make when you're already learning Figma design? And can designers use Figma Make? So all of these questions will be answered one by one. But students, before I move ahead, I hope that you've watched all of our previous Figma videos, especially the Foundations of Figma course, because that will help you understand a lot of things from a basic core perspective. If you haven't, that is also completely okay. You can watch this lecture and then move ahead to the previous video so that you can clear all of the backlog. Please note that Figma design was primarily for UI designers who wanted to create interfaces and design systems and components. But Figma Make take things to the next level, where you can actually copy paste a Figma frame, or copy paste an image, or you can just prompt something and you can convert fully functional prototypes within minutes. It's almost magical when you actually see it. So I'll take you through the entire interface in lecture 1, the top features, and a prompting framework that will help you get the most out of Figma Make. And don't worry, the entire video has been designed for beginners. So even if you've never designed in your life, if you've never coded in your life, don't worry, I'm going to cover everything about Figma Make. So let me take you through the entire agenda of today's session. In module number 1, I'll give you a walkthrough, like a detailed tour of how Figma Makes UI even works. So UI means the user interface, all the features that you see on the screen. Right now on my screen, I have opened up Figma Design, but Figma Make is different, okay? So if I go and open up a new tab, as soon as you enter Figma's dashboard, on the top right corner, you can see this option called Make. And as soon as you do that, you will enter Figma Make. So this is the UI, this is the user interface, and don't worry, I will be taking you through every single icon one by one. In module number 2, I'll show you how you can create and edit and attach files. And in module 2 is the actual fun part where we will be building things, because in module number 1, I'll just take you through the UI. In module number 3, I'll show you that once we have created something, how do you edit it? How do you connect it to a backend infrastructure? And what is a backend? Don't worry, I will be showing you all of that one by one. In module number 4, I'll show you how you can review and publish a functional prototype. So once you have created something, you really want to share it with other people, right? So how do you set a password for that? How do you maintain privacy? I'll cover all of those things in module 4. And in module 5, I'll take you through their free Figma community that has a tons of resources for you to get started. So let's start with module number 1, where I'll take you through the UI of Figma Make. So the entire workspace is super simple. We have a toolbar on the top and some important panels on the bottom left. The most important panel here is the prompting panel. And this is where we will describe the idea. Now, the fun part is that you can either paste a Figma frame, you can paste a JPEG image also, and you can describe any ideas, just to give additional context to that Figma frame. And don't worry, I will be doing a demo of all of this in module 2. Right now, I'm just showing you the interface. This is an area where they are recommending you some basic prompts that you can just put to get started. On the top left corner, you have all the file creation settings. This is where you can rename your file. So I can say lecture 1 video. If you click on this icon right here, you will be directed to Figma Learn. And for those of you who like to take notes from written documentation,
This is where you can go through every single thing. Now, right now, Figma Design AI tools are available on paid plans, and it requires a full seat to use AI tools in Figma Design. Now, all of the documentation that you see right now, this is all about Figma Design. My video is currently on Figma Make. So before you even start with any of this documentation, it's just very important for you to just understand what is Figma Make and how does Figma Design even work. This icon right here helps you refresh the preview once you've made any changes. This is called console. It is not relevant for designers. This one is mobile preview. So basically you can see how your product or your website might look on computer versus the phone. When we make something, you can either see the code behind it or the preview behind it. And these are all the publishing and sharing settings that I will be covering eventually. This is my help and resources. And if you go on YouTube videos, you'll find a bunch of other YouTube videos on the same topic. If you click on Help Center, it will again redirect you to the entire Figma Help Center where you can just ask questions. So when it comes to importing design and images, I would always recommend you to click on the plus icon and either import a frame from Figma or simply upload an image, and you will not believe how accurate it is. I will be showing you a demo in just a while. The second option is to upload your design system. So let's just say that your company is following a certain color palette, they're following a certain typography, and you want your prototype to follow all of those rules. Maybe you're making an iOS app and you want it to follow the HIG guidelines, the human interface guidelines that are mandatory by Apple. In those cases, you'll have to click on the library icon and select the right kits. So the kits need to be added to your project, and only then you will be able to add them here. Now, this third option is my favorite one. It is point and edit, where once you have created something, you can actually hover over a specific part and make changes. And don't worry, we will be coming to this one by one. Then on the top right corner, we have project controls, where you can decide who will this be shared to. If you want to publish it with a password, you can do that as well. So here it says who has access. Anyone with this link has access. Can they view it or can they edit? Do you want to set a password for it? Would you want to allow viewers to copy, save and export from this file? So depending on what you want, you can just change those settings. So this was the share panel, and once I go on publish, this is where you can put the entire prototype on a live link without buying a domain. They give you a free domain. So let's also figure out domain settings. For a lot of people who are already in the field of web development, they keep asking me this question that, Ansh, how do you set up the domain, and what about the metadata and all of those things? So for anybody who has never made a website before, let me show you something very cool. Okay, so if I go to Ansh Mehra on Google, this is where you will find the result. Now this image that you see in front of you, this is called a fav icon. This is the title of my website, and this description is called the meta description, and all of these things come under the umbrella of metadata. So this is where you can set the title. This is the title. For example, the cutting edge school is the title, Ansh Mehra medium is the title. So all of those things can be added here. This is where you can add a meta description. So it has to be around 150 to 155 characters, which will help people search your product more easily. This is where you need to put the language, and you need to put an ISO language code. So if your website is in English, just type EN. Otherwise, you can always ask Claude to figure out what language code you have. So you can say that what is the language code for Hindi or French, and it would just tell you very quickly. Is Google Analytics ID. So for people who want to track the traffic that comes on their website, they can set up a Google Analytics account and paste all of that information here. And if you want to exclude from search engine results, which means that if I put a keyword, if you do not want your Figma Make prototype to come up in the search, then you will let this checked. But if you want other people to discover your work, then you'll have to uncheck it. This is for accessibility. If you include the skip links, then it would add visually hidden links to the main content, so users can skip repetitive navigation elements. Now, we will not get into the details of it because this is a separate interaction design chapter altogether. The important thing here is that if you include the skip links, it will become more accessible. This is where you will need to add the fav icon. This is where you can add your social sharing image. So anytime you share a link on LinkedIn or Facebook or even to someone on WhatsApp, do you notice that there's a banner image that comes in? That banner image is a 16:9 image, and you can upload that here, and it's super important to do all of these things. In my domain section,
this is my base domain. It is not published yet, so it's not saying anything. But if I go here, once we make something, you'll see how it'll give us like a dummy domain and you'd be able to edit it here. And if you go through this documentation, it'll take you through a step-by-step process of managing a custom domain for your website. In the integrations panel, we have the Supabase integration, which is basically the backend infrastructure of your app. What is Supabase? We'll cover all of that in just a few minutes. So I just showed you the site general settings. I've also showed you the fav icon and the custom code. I've also shown you the preview and the code toggle, the code view. Now, if I go and let's just say I have closed my tab, all of my projects will be available on the dashboard. So let me open up my project again. If I go here in the code view, you can see that a very basic boilerplate kind of content is already generated here. And once we actually create something, you will realize that Figma Make writes down every little thing. In fact, they also have a file where they have added these basic guidelines for the design system. So there's a preview panel and you will understand how the preview panel is working once we have created something. So in module 2, I'll actually show you how to take a Figma frame, copy that Figma frame and then create like a proper coded output out of it. But I just wanted to give you like a quick tour of how the app looks like. So now that all the basic theory is done, let's move on to module number 2, where we will actually create something and edit something. So I have a Figma frame right here. So as you can see, it's a pretty decent looking to-do list. You have today, you have some labels, you have write a task. I'm going to copy this and I'm going to simply do a command V here. So the entire frame is automatically pasted, and you can do this with a JPEG as well. It will completely work. And now I will say build a to-do list app that has very cool hover interactions, and I'll press enter. And now as you can see, the first step for Figma Make is to think about what I've said. So now you can actually trace the entire thinking process. On the right side, you can see it says working out the details. And if I switch to code, you will see how it has already started to make the designs one by one. So as you can see, it is coding at 100x speed, something that is almost magical to me, because imagine how smart and crazy it is. It's been able to look at my image and figure out what would be the best coding algorithm, the best component architecture to build something like this. And imagine the level of collaboration this will enable between designers, developers, and product managers. Because as I keep saying, folks, the future belongs to those who have good health, great taste, strong pattern finding skills, and the vocabulary to describe those patterns. And every UX designer will soon evolve into a product architect, like a proper chief product architect. Like a product designer would actually transition to become a product builder, because you will not be expected to just design, you will be expected to make these cool things. So as you can see, it has my hover animations, but this write a task thing has come to the left. So if I want to make any changes, I can simply say shift the write a task input to the bottom of my to-do list. So now I don't have to design this on my own. And by the way, this is like working. Okay, can you see how beautiful the animations are? It is keeping in mind every single thing. Look at the fluid animations, right? Everything is working perfectly. And if I go here, I can switch between the desktop mode and the phone mode. And if you want to put like a custom domain pixel right here, so I can simply say 10 or 1920 by 1080. So now you can see how this entire thing would look. And now with just my prompt, it has added write a task to the bottom. So I can simply say clean the house, and now it's added. Now, of course, this is the first draft of the prototype, right? You will have to collaborate with Figma Make again and again to sort of get to the final point, but it's still pretty cool, because if I go here on the publish panel, if I enable feature on community, then other people would also be able to see this, but I don't want that because it's a private project. So I'm not going to select feature on community, but as soon as I click on publish, you will now see Figma Make launch the entire thing on a URL. So it has given me a free URL. And now check this out. This is actually available on the desktop. Now, if I click here in my settings panel, I can add the metadata. I can go here and I can edit the domain as well. And I can simply say anshmehra.figma.site. Now, I've already used Ansh Mehra already before. So I'm going to make Ansh Mehra 1 and I'm going to click on change URL.
And now anybody can access anshmehra1.figma.site and they can actually see the prototype that I have created. Now, I personally find this really, really cool. And if you're wondering that how is Figma even making this, does Figma have its own AI? So Figma Make uses the Claude Sonnet 4 model with extended thinking, and Claude has been created by Anthropic. So it's not like they have their own models, they have collaborated with Anthropic. And Anthropic Claude is very, very popular for creating amazing UI. So it's been viral on the internet because of its ability to make these things. So now the bigger question is that how do you write a good prompt? What is the right checklist to write an amazing prompt? So let's cover that step by step. All right. So when it comes to writing a prompt, a huge part of your prompt is the ability to describe what you want and be very specific about what you expect. And you have to mention every little thing that at least is coming up into your mind. So I'll show you a bad prompt versus a good prompt. So let's just say that you don't have a Figma frame, right? You're not a designer and you're just someone who's trying to make something new. So let's have two different files. Okay. I'm going to have file number one and I'm going to rename this as weak prompt. I'm going to make another file. I'm going to call this as strong prompt. Okay. And if I did not have anything, right, as an idea or as an inspiration, I can simply say design a small, clean to-do list app interface. Okay. And I'll click on submit. Now this is actually a pretty weak prompt, but a good prompt would be design a small, clean to-do list app interface with rounded cards, maybe calming illustrations, a spacious layout, a friendly sans serif font, and a soft color palette. So do you notice how all of these things really help me put things in context for Figma Make? And all of these small details, right? All of this vocabulary has come from my own experience as a product designer. So when you hear a lot of people say that, oh, this will replace designers completely, my question is, if you do not know the first principles of your subject, if you do not have the vocabulary to describe what you want, if you do not have enough intelligence to even figure out what is good, what is right, how will any tool help you? So now I'm going to copy this and on my strong prompt, I'm going to paste this right here and let me show you. So this is what it has created with the weak prompts. As you can see, it has my tasks, it has add a new task, and it has some of these things ready. And by the way, none of this is getting saved because even if I publish this, if anybody uses this to-do list app, nothing is going to get saved because there's no backend here. What you see in front of you, this is the front end. And for the backend, there is a separate app that you need to know, which is called Supabase. Now, you don't need to learn Supabase. Okay, you just need to create your account and make a project. So once you go to Supabase, you basically have organization. So I have like a Figma organization and then you have these projects. So these projects can be created from Figma Make itself, but I'm just letting you know that Supabase is an app that actually makes your prototype usable. Now check this out. This is my weak prompt. This is my good prompt. As you can see, take a moment to organize your thoughts and plan your day. Add a new task. Okay. Take my pet for a walk. Right, and as you can see, my active tasks and my completed tasks are separate and I can just delete them myself. And it is so much more cooler than this one because I was able to speak about the illustrations. I was able to speak about, small things that would have made my app really good. Now, the question is, how do you decide, right? Is there a checklist to this? Turns out there is. You have to follow a structure about what you want. So this structure will help you write a good prompt anytime you're making a functional prototype on Figma Make. So the first one is a description of what you're trying to create. If there are certain properties, let's just say you wanted to have more hover animations or less animations, you just have to specify that. If there are any certain elements you want to add, like a drop down or a radio button or a header component, you need to add that. Then you come to composition. Composition means that you want the headers to be on the top and maybe the list on the right. You have to talk about the structure of it, that how are all of your elements composed within each other. Now the last two are optional, but if you want to specify a specific type, right? You want inter only, or you want Comic Sans on, or you want sans serif fonts. You have to specify that. And if you have any colors that you want to keep in mind, you can add the hex code as well and it'll keep that in mind. The important thing to note here is that you need the vocabulary. You need to know the design terminology. Otherwise, you will always get confused. Now, when it comes to attaching files, please note that you can attach any design or components into your Figma Make file. Now, as beginners, you might not really want that because you're just like prompting and figuring things out, but you can import anything
either from your Figma frames, or you can import from your own images or from your own library. So it's a very, very seamless tool. Now, this is where you can rename it, duplicate it, move it into a different project. You can move it to trash. So now that I have all of these things, if I go and select this point and edit feature, I can select any of these divs and I can either change things manually. So I can just change the color, maybe change the border radii. I can also change the padding and stuff from here. I can also check the exact code that has created this. So all of these things are manually. But if I move from edit properties to this panel right here, then I can actually edit these things with a prompt. So if I were to say, make this div stand out with shadows and a gradient or like a subtle glow effect. Once I press enter with the point and edit feature, I have selected a div, a very specific div, and whatever feedback that I've given, it will only be applied to this card right here. So now it has thought about it. It has understood how to sort of fix that, and it will rewrite into a new version too. So now you can see it has like this really cool standout effect. Like it's super smooth and it's actually kind of like the way I would want it, right? So this point and edit feature is really, really useful. I've already shown you how you can basically put all of these things together from an image. And what I will do is, if I go here and see this on my phone, you'd notice that it looks absolutely perfect. And you can actually share this with anybody else. In fact, I'll put some links of some really cool projects that other people have created in their Figma community. You'd be surprised to see. Now, let's just say this is version 2, right? And in the middle, I kind of realized that no, this is not really what I wanted. I can simply come back to my version 1 as well. So it can restore from version 2 to version 3. Now, please note that when it comes to attachments, you can upload multiple screens one by one. You can put like a basic screen and a color palette. Like you can upload a bunch of those images, but I would recommend you to do it slowly, component by component. So if I am here for this single component, I can then say, now add a new feature where if I have completed all the tasks, there is a congrats panel that opens up, and I'll press enter. So slowly, I am building all of those things, right? I'm not trying to create everything in one single shot. Another thing here is that to copy any frame, you just have to click on copy. In case that wasn't clear, and you can paste multiple frames, and I've added like a bunch of these examples in the slides. So if you want, you can get all of these slides from the Figma community. Another thing I wanted to show you was that when it comes to text, if I click on point and edit, and if I select this text right here, I will have access to a bunch of important settings that I can just change, right? So right now it's coding something, so it won't be able to make those changes. But as you can see, I can change the color, a bunch of different things. Otherwise I can just prompt it, right? So it completely depends on you. How do you want to edit? Do you want to do like a point and edit thing, or you can do things manually as well? So it's a very, very seamless way. And anytime you're making changes, I would always recommend to use the point and direct feature, because otherwise there's a high chance that Figma Make might get confused, or maybe you might end up highlighting the wrong thing. So it has now reasoned that I will add a congratulations panel. So it says a new congrats panel component with celebratory animations, logic to detect when all the tasks are completed, smooth entrance animation, and cheerful messaging. So I am super excited about what it would create. Now, let's come to module number 3. Once you have created like a bare shell, how do you style it and how do you set up the backend? Now you can reference your own styles in the very beginning of your entire thing. So if I go back to files and let's start with Figma Make, what I can do here is that select the library icon and then select the iOS 16 kit. And if you go on edit styles, you can actually edit these things yourself. But if I don't want it, that is also okay. So maybe you want to keep this as it is. And I can switch between iOS 16 to iOS 15 as well. Let's just keep iOS 16. And as I showed you, if I go and edit guidelines, you can edit the markdown guidelines. If I go here and go and edit styles, you can do that as well. And if you click on this icon right here, you can download the code as well. So if you want to share this file with anybody else, that is also there. So now once I click on this entire thing, I have this very cute congratulations animation, and I can start afresh and I can say eat food. And as soon as I click on this, I again have a really cute congratulations animation.
So now if there's anyone here who has never published any libraries, please note that a library is created inside Figma design. So for example, if I have this Figma design right here, I'll have to go to assets, click on this library icon and then click on publish. And once I click on publish, all of the components and styles that I've added, they will be available on my file. So if you've never ever done that, please make sure that you go through our libraries video that we have already created. When you have your library getting published, at the very bottom you'll see an option that says export to Figma Make. That way you'll be able to easily access it, and then once you click on your library icon, you will have the entire list. So I've already shown you how to edit the styles. I've also shown you how you can edit the guidelines, which is into a markdown file. Now we come to something way more exciting, which is all about adding a backend infrastructure to your functional prototype. So let's just say I want to add memory to this, right? So I will say add a login to this page so that it saves information for my users, and I'll press enter. Now, because I have specified add a login to this page, Figma Make automatically knows that now is the right time to connect Supabase. So now it will say we need to add login functionality and save user information. And now I see this prompt that says connect to Supabase. So now I'm going to choose project, and I can already see my project panels right here because I've already connected my Supabase account. But when you do this for the first time, you'll have to sort of connect to this Supabase account. It's a very simple process, just like creating your new account. And I'll click on new project, and I have reached my project limit because each organization gets 2 free projects. So what I will do is I'll simply select this one right here because I'm on the free plan for Supabase. And once I have connected, now all the login information, the ID and the password, all of those things will be stored on Supabase. Now, if you're wondering that what is the limit and how exactly does this work, all of those details are in the documentation, and I will share the link to the documentation of Supabase and Figma Make in the description. This is the first time you're seeing this software, so I don't want to like intimidate each and every one of you. The goal here is to show you where product building is going, what designers now need to learn, what is the future of design. Because if you learn these things, imagine the kind of value you can give to your startup or to your company or to your team members. Imagine the kind of value this will have when you're prototyping ideas. So the important thing to note here is that most people think that, oh, if Figma Make is here, I don't need developers anymore. And that is not true. This is a catalyst towards building great products. This is a catalyst towards designers, developers, and product managers working seamlessly together. But don't come into this assumption that, oh, now we should not learn design, now we should not learn coding and all of that stuff, because that is not scalable. Now, if you're wondering what is Supabase, as I told you, it creates a backend infrastructure for your app. It's completely open source. So let's just say that a user enters his or her credentials, right? You need Supabase integration to check if the credentials are right, because where are people finding these passwords, right? There has to be some logic, some memory of what is the ID, what is the password for each and every account, what is the to-do list. So if the credentials are invalid, it will say credentials not found. If the credentials match, it will fetch the user data, which is our to-do list, and it will show you successful login. Now, if you go to the settings panel, this is where you'll have to select and integrate your Supabase. So now it says enter your email and your password. So if I go here on the settings panel and in my Supabase, you can see that all of these things here are ready, and you can disconnect, you can manage the project. All of these things will be covered eventually. And now if I go here to the login screen, let me show you something. If I click on sign up, you can see it says your full name. I'll click on Ansh Mehra. I'll go and create account. So now my account is created, and it remembers that it's Ansh Mehra. I have a profile picture and I can sign out. Now, if I go to my Supabase, you will see that in my project panel, I have these 3 things ready, right? And if I go here into my Supabase settings, I can actually see where it is storing all of this information. So it says V2 to-do list app with labels. Okay. So this is the one. And if I go here, you can see it has one table and it has one function. And if I go here to the database panel, you'll be able to see all of the tables. So you see there is a key and then there is a value. This is like a visualization thing of how things are working. And all of the important details about your data, about the storage, every single thing one by one is available here in one single shot. Now, you don't have to learn about this right now because we will cover all of these things one by one. And if you want to really understand these things, you can always go to the API documentation. But for now,
If you're a designer, if you're a PM, you don't have to get into the details of it. We'll simply keep this very, very clean. For the very first time, if you see this, you might have to click on connect Supabase. I've already done this, so I've taken screenshots. You would have to sign up for Supabase. You'll have to create a new organization, and in the organization, you can put any organizational name. Make sure that the type is personal and choose the free plan. It has some limitations, but it is more than enough. Now, one important thing is that if you end up creating a new project from Supabase, not from Figma Make, if you end up creating a project from Supabase, both ways are okay, but if you do it from Supabase, you have to make sure that you select the right region and you keep a database password and you remember it, because you will not be able to get this password easily. So please make sure that you save this. And now when you put your prompt, it'll come up with this option that you need to set up your account. You have to like connect those things, and you'll see a prompt like this. I have already done it, so I don't want to delete all of that, but this is how the entire menu would open up, and you'll have to select authorize Figma. Then you'll see this option right here that we have already showed you before, and finally it would say Supabase connected. And with that, you'll finally have your backend integration ready without any coding. All right. Now, once you have completed everything, how do you preview and publish? Very straightforward. You go to the publish setting, you simply click on publish, and as soon as you do that, you will see a status here that says publish. So it takes like a minute or two, but it's very, very seamless, very, very fast, and you can connect it to a domain. And if you click on update, if you have made any changes, you can just simply click on update again, and it will show you that just now it has been updated from Ansh Mehra Tools, and you can just go to that website and sort those things there. So you can see the title is strong prompt, and if I put my details and my password, you can see that it has saved my tasks. So I think publishing is like pretty straightforward. We don't have to spend much time on that. Please note that if you want to do your domain settings, I have put all the settings right here, what we have discussed in the very beginning as well. And the last part is about understanding Figma community. So the thing is, if I go here on the plus icon, I can search something here. Let's just say to-do list, and you'll find like a bunch of things that you can add. So if I want to attach a certain style or any iconography, let's just say I take this thing, I can attach this design right here, and I can say pick elements and colors from this and redesign my login page. So now Figma will take that JPEG, understand how those colors are, and then apply those colors on my final file. So it's a pretty good way to just test ideas. But please note that this is not a live product. You can't really like sell this product, right? This is a prototyping tool that you and your designers can work with. So when you're designing something, you can actually create the basic code, and it's just a very faster way of shipping your products. Now, I want to have some FAQs that most people would have around this. So first of all, people say that where is the published web app even hosted? So all of the prototypes are hosted on AWS, Amazon Web Services, and the domain and routing is served by Cloudflare. Now, if you want utmost privacy for your work, you will need the enterprise plan for both Figma Make and Supabase. Is this SEO supported? So Figma Make optimizes all the published files automatically, but it does not offer specific customizability for SEO optimization. Will you be charged separately for hosting? No. So while they are in the beta plan, hosting is included as a part of your existing paid plan. Now folks, this entire session is available in both English and in Hindi. I've just taught you this in English, but if you have any other friend who might be more comfortable in learning this in Hindi, in the second half of this video, they will be able to watch this in Hindi as well. This lecture was all about showcasing the basics of Figma Make, but in the next lecture, I'll actually show you how to build something really cool with Figma Make as well. So if you're excited about that, I want you to make your notes and share them on LinkedIn and tag Figma, tag me, and make this video go viral, because we will not upload lecture number 2 until unless we reach 200 comments with proper feedback in the comment section of this YouTube video. Make sure you click on like, make sure you share this with everybody in your design community. Help everybody else to learn and evolve and build with you together. Alright, so I'll come back and check this out. The entire login page is now sorted, and you can actually see the code as well. So I hope that this entire session was supremely inspiring. I personally think this is absolutely game changing. All of these slides will be available to you for free on the Figma community. I will be sharing the link to this
in the description. Now, this was just episode 1, which was to help you get familiar with all the core features of Figma Make. In our next episode, we will take a client brief and build our first web app from scratch using Figma Make. So don't forget to click on the subscribe button. I hope that you're taking care of your mind and body. This is your dost Ansh Mehra. And you were learning from the cutting edge school. वेलकम टू आवर फ्री फिग्मा एआई कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको फिग्मा मेक, फिग्मा साइट्स एंड डेव मोड एमसीपी सर्वर के सारे फीचर्स पढ़ाऊंगा। हर एक एपिसोड इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ये है हमारा फर्स्ट एपिसोड, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने फिग्मा डिजाइन्स को फुल्ली फंक्शनल वेब एप्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी कोडिंग के। हम साथ में स्टेप बाय स्टेप फिग्मा मेक सीखेंगे एंड ये समझेंगे कि एक फुल्ली फंक्शनल टू डू लिस्ट ऐप बनता कैसे है, वो भी बिना कोडिंग के। दिस इज योर दोस्त अंश मेहरा और आप सीख रहे हैं फ्रॉम द कटिंग एज स्कूल। सबसे पहले आपको figma.com पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाते ही आप फ्री प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हो। Figma Make और बाकी सारे AI फीचर्स बीटा फेज के अब बाहर आ गए हैं, तो अब आप अपने स्टार्टर प्लान पर भी ये फीचर्स थोड़ी सी लिमिटेशंस के साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद चैप्टर नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मेरे को सबको एक रिमाइंडर देना है कि ये जो पूरा का पूरा कोर्स है फिग्मा एआई का, इसके अंदर 6 लेक्चर्स होंगे और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जहां पे मैं आपको फिग्मा मेक के फीचर्स बताऊंगा। अब फिग्मा मेक नॉर्मल फिग्मा डिजाइन से बहुत डिफरेंट है। अभी तक हमने यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस बनाए थे, वहां पे मैं आपको फिग्मा डिजाइन सिखा रहा था, जो मोस्टली प्रोडक्ट डिजाइनर्स और यूआई डिजाइनर्स यूज करते हैं। बट फिग्मा मेक एक ऐसा टूल है जो आपके फिग्मा फ्रेम्स को कोड करके एक फंक्शनल प्रोटोटाइप बना सकता है। पूरा का पूरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक प्रोटोटाइप, जिससे आप एज अ डिजाइनर बाकी प्रोडक्ट डेवलपर्स या प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ बैठ के अच्छे से चीजें डिस्कस कर पाओ एंड आपको खुद प्रोटोटाइपिंग करने में ज्यादा टाइम ना मिले, बिकॉज इट्स अ हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। हाई फिडेलिटी मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा किसी को आपका प्रोटोटाइप यूज करते हुए कि अरे ये तो बिल्कुल फिक्शनल है, ये तो कोड हो ही नहीं सकता। तो फिग्मा मेक आपके लिए वो करेगा। तो लेक्चर 1 में मैं आपको बताऊंगा कि फिग्मा मेक सीखने की जरूरत ही क्या है, फिग्मा मेक का यूआई काम कैसे करता है, इसके अंदर आप प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हो, और जो पूरा का पूरा वीडियो है वो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। इस लेक्चर में 5 स्पेसिफिक पार्ट्स है। पार्ट नंबर 1 में मैं आपको फिग्मा मेक का पूरा यूआई बताऊंगा। तो यहाँ पे ये मेरा फिग्मा मेक है। इट इज अ डिफरेंट ऐप, फिग्मा डिजाइन से बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फाइल्स बनती कैसे है, इसमें अटैचमेंट्स कैसे जाती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि चीजों को आप स्टाइल कैसे कर सकते हो। फिर जो आपने फिग्मा मेक में बनाया है उसको आप प्रीव्यू और पब्लिश कैसे कर सकते हो, एंड इन दी एंड इसकी कम्युनिटी कैसे चलती है। अब मॉड्यूल नंबर 1 पे आते हैं कि फिग्मा मेक का यूआई काम कैसे करता है। तो अगर आपको फिग्मा स्टार्ट करना है तो आप figma.com पे जाके पहले तो अपना अकाउंट बनाओगे, और अगर आपने आज तक कभी फिग्मा यूज नहीं करा है तो आपने बस figma.com पे जाना है और अकाउंट बनाते ही आपको टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे मेक दिखेगा। तो जैसे ही मैं मेक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा एक नया फाइल बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको पूरा का पूरा एक वर्कस्पेस लेआउट दूं तो ये है हमारा टॉप नेविगेशन। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, फिग्मा मेक से बातें करेंगे और राइट साइड पे मेरा फाइनल वेबसाइट बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉम्प्टिंग पैनल की, जो मेरे बॉटम लेफ्ट साइड पे आता है, यहाँ पे हमको अपना आइडिया डिस्क्राइब करना है। तो अगर आप एक वेबसाइट के बारे में सोच रहे हो, अगर आप एक डैशबोर्ड के बारे में सोच रहे हो, आपके मन में जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पे टेक्स्ट में डिस्क्राइब कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आता है जो मैं हर वीडियो में बार बार बोल चुका हूं कि अगर आपको अपना सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, अगर आपकी फाउंडेशंस क्लियर नहीं है, अगर आपके सब्जेक्ट की वोकैबुलरी मतलब जो शब्द यूज होते हैं सब्जेक्ट में, अगर वो ही कमजोर है तो आपको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि यहाँ पे लिखना क्या है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि आप यहाँ पे फिग्मा फ्रेम भी पेस्ट कर सकते हो, बट जो डिजाइनर अपनी थ्योरी नहीं सीख रहा है, अपने फाउंडेशंस नहीं सीख रहा है, वो कभी भी एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिख पाएगा। यहाँ पे आप एक फिग्मा फ्रेम भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक सैंपल फ्रेम अगर लेके चलूँ तो ये मेरा एक टू डू लिस्ट का फ्रेम है। अगर मैं कॉपी करता हूँ उसको और यहाँ पे बस पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि उस फिग्मा फ्रेम का एक इमेज आ गया है। वो फिग्मा फ्रेम लिंक नहीं हुआ है, एक जेपेग ही गया है। और अब इस इमेज के ऊपर मैं अपना प्रॉम्प्ट डाल सकता हूँ कि भाई मेक दिस इनटू एन ऐप, एंड एंटर प्रेस कर देते हैं।
तो अब आप देख सकते हो कि फिग्मा मेक यहाँ पे मुझे थिंकिंग दिखा रहा है और फिर वो सोच रहा है। अब इसको चेन ऑफ थॉट बोलते हैं। चेन ऑफ थॉट का मतलब ये है कि मैं पढ़ सकता हूं कि फिग्मा मेक सोच क्या रहा है। और आने वाले मॉड्यूल में आपको ये भी बताऊंगा कि फिग्मा में कौन सा एआई यूज कर रहा है, क्योंकि ये अपना खुद का एआई नहीं यूज कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा प्रॉम्प्ट था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो फिग्मा मेक ने अपनी समझदारी से उसको जो भी लगा उसने बनाना शुरू कर दिया। अब प्रीव्यू तो लोड हो रहा है, बट यहाँ अगर मैं कोड पे जाऊँ तो आप देख सकते हो कि इतनी तेज़ी से फिग्मा मेक ने यहाँ पे कोडिंग करनी शुरू कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोड पहले इंसान लिखते थे। अगर किसी को प्रोटोटाइप बनाना भी होता था तो ये सब कुछ एक इंसान करता था। एंड जब तक मैं आपको कोई चीज़ बता रहा था, विद इन 60 सेकेंड्स फिग्मा मेक ने मेरा पूरा का पूरा प्रोटोटाइप बना भी दिया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी इंटरैक्शंस ऑलरेडी बन चुकी है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर गिर गई है, तो अगर मुझे कुछ भी चेंजेस बोलने हो तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बट ये डिजाइनर्स, आपके लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। लोगों को लगता है कि एआई मेरी जॉब खा जाएगा, जबकि सच बात तो यह है कि एआई जॉब्स को रीडिफाइन कर रहा है। आप जिस भी जॉब में हो, चाहे आप डिजाइनर हो, यूआई डिजाइनर हो, इंटरैक्शन डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, आप जो भी हो, जॉब तो रहेगा, बट जॉब का जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो बदल रहा है, वो और इम्प्रूव हो रहा है। और इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियो से सीखो। और इसीलिए मैं हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ। ये कोई मेरा एआई नहीं बोल रहा है, ये मैं एक्चुअली मैं बैठ के डबल एफर्ट कर रहा हूँ, जिससे आप लोग इन चीज़ों को टाइम से सीख पाओ। अब जब बात आती है इंपोर्ट करने की, तो यहाँ पर आप अपना जेपेग डाल सकते हो, आप अपना फिग्मा का फ्रेम डाल सकते हो। आपको अगर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट बनाना है, आप वो भी बना सकते हो, क्योंकि कभी कभी जब प्रोटोटाइपिंग हो रही होती है तो आपको पूरा का पूरा वेबसाइट नहीं बनाना होता, कभी कभी बस एक कंपोनेंट बनाना होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसमें अपना डिजाइन सिस्टम भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं लाइब्रेरीज में जाऊँ, अगर आपको कोई सर्टन किट्स यहाँ पे डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो जैसे अगर मैं iOS ऐप बना रहा हूँ और iOS 16 के लिए बना रहा हूँ, तो iOS 16 की यूआई किट यूज़ करूँगा तो ज़्यादा समझदारी होगी। बट अगेन, जिस इंसान को पता ही नहीं है कि ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस क्या है, उसको कभी नहीं समझ आएगा कि कौन से किट से क्या उठाना है। एंड बाय द वे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो और अगर आप पहली बार हमसे डिजाइन सीख रहे हो, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमने learnuiux.in पे फ्री 9 हफ्ते का सिलेबस बनाया हुआ है, जहां पे मैंने बेसिक्स ऑफ डिजाइन एंड बेसिक्स ऑफ फिग्मा डिजाइन एंड बेसिक्स ऑफ डिजाइन सिस्टम, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है फॉर फ्री। एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसके पास टाइम है, आप प्लीज इन चीजों को थोड़ा फाउंडेशनल लेवल से सीखो। अब मान लो कि आपने एक वेबसाइट बनाई और आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट्स में चेंजेस की जरूरत है, तो यहाँ पे जो मेरे पास तीसरा ऑप्शन है वो है पॉइंट एंड एडिट का। तो अगर मैं किसी भी पार्ट पे हवर करता हूं, क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आउटलाइन बना रहा है। ये आउटलाइन जब वो बनाता है तो आप नोटिस करो डिव लिखा आ रहा है। अब ये डिव क्या है? कोडिंग में जब भी आप कुछ भी बनाते हो तो ये बक्सों के अंदर बक्से बनते जाते हैं। बेसिकली हर चीज एक बॉक्स है, एक डिव है, और एक डिव के अंदर और छोटे छोटे डिव्स होते रहते हैं। तो ये बड़ा डिव, उसके अंदर ये छोटा डिव, विद इन दैट उसके अंदर एक पैराग्राफ और एक और छोटा डिव जो कि आपका चेक बॉक्स है। अब अगर आपको एक स्पेसिफिक पार्ट पे एडिट करना है तो आप पॉइंट एंड सिलेक्ट करके उस डिव को सिलेक्ट कर सकते हो, और ये जो डिव है, यही डिव हर जगह बार बार डुप्लीकेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो खुद से मैन्युअली चेंजेस कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अपने आप ही यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसका बॉर्डर रेडियस चेंज कर सकता हूँ, इसकी पैडिंग और मार्जिन चेंज कर सकता हूँ। तो पैडिंग का मतलब क्या हुआ? पैडिंग वो चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड का स्पेस है। तो आप देखो, ये जो मेरा पैडिंग है, ये हॉरिजॉन्टल पैडिंग है। मतलब जब जब मैं यहाँ पे नंबर बढ़ाऊंगा, इधर और इधर स्पेस बढ़ेगा। ये मेरा वर्टिकल पैडिंग है, जब जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो टॉप और बॉटम पे मेरा स्पेस बढ़ेगा। मार्जिन का मतलब ये है कि अगर मैं मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो मार्जिन मेरे डिफ के बाहर ब्लीड कर रहा है, अंदर नहीं। तो मार्जिन आपके डिफ के बाहर के स्पेस को बढ़ाता है और पैडिंग आपके मार्जिन के अंदर स्पेस को बढ़ाता है। अब अगर आप इस पार्ट पे क्लिक करो तो आपको वो भी दिखा देगा कि कोड में कौन सी जगह पे इस कंपोनेंट की बात हो रही है। अब मान के चलो कि मुझे खुद से नहीं करना, मुझे बस प्रॉम्प्ट करना है, तो यहां पे मैं एडिट प्रॉपर्टीज की जगह एडिट विद प्रॉम्प्ट भी कर सकता हूं।
और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐड अ hover state, तो विद जस्ट अ सिंपल प्रॉम्प्ट फिग्मा मेक फटाफट से ये सारे चेंजेस खुद कर लेगा। टॉप साइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रिफ्रेश प्रीव्यू है। ये तभी काम आता है जब यहाँ पे चेंजेस हो गए हो बट चेंजेस राइट साइड पे रिफ्लेक्ट ना कर रहे हो। ये वाला जो मॉडल है ये कंसोल के लिए है। जब भी कोई कॉल होती है या डेटा कॉल होती है तो यहाँ पे आपका सारा का सारा अपडेट आता है। बट ये अभी एज बिगनर हमको करने की नीड नहीं है। ये हमको तब काम आएगा जब हम इसका बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। जो तीसरा आइकन है वो है मोबाइल प्रीव्यू का, कि ये वेबसाइट वेब वर्सेस मोबाइल में कैसी दिखती है। राइट साइड पे आपको मेरा अकाउंट दिख रहा है। अगर यहाँ पे बाकी लोग भी काम कर रहे होते तो मुझे उनका भी डीपी दिखता। ये मेरा फुल स्क्रीन व्यू है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको फुल पेज प्रोटोटाइप दिख जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सेटिंग्स का है। इस पे हम अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। एक बार मैं पीछे चला जाऊं, यहाँ पे आता है पब्लिश और यहाँ पे आता है शेयर, एंड डोंट वरी एक एक करके हम इस पे आएंगे। तो प्रोजेक्ट कंट्रोल्स की अगर बात करें तो टॉप राइट कॉर्नर पे आते हैं आपके सारे कोलैबोरेशन फीचर्स। अब प्रोजेक्ट कंट्रोल्स के अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वो है शेयरिंग ऑफ द फाइल। तो यहां अगर मैं शेयर पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आप उन लोगों का ईमेल आईडी डाल सकते हो जो आप के साथ इस वेबसाइट पे काम करने वाले हैं। बट ये बात बहुत जरूरी है कि इन ईमेल आईडीज पे उनका एक फिग्मा अकाउंट होना जरूरी है। अगर फिग्मा अकाउंट नहीं भी होगा तो उनके ईमेल पे एक ऑप्शन आ जाएगा टू मेक दैट अकाउंट। अब यहाँ पे अगर हम आए तो एक्सेस सेटिंग्स में हु कैन एक्सेस में अभी एनीवन दिखा रहा है। इसमें अगर आप ओनली इनवाइटेड पीपल करते हो तो अगर किसी के पास लिंक भी है बट अगर उनके पास ईमेल आईडी पे एक्सेस नहीं है तो वो आपका प्रोटोटाइप नहीं देख पाएंगे। एनी वन में व्हाट कैन दे व्यू इट और कैन दे एडिट इट, इसको आपको व्यू पे ही रखना चाहिए। एंड यहाँ पे एडिशनल सिक्योरिटी के लिए एक पासवर्ड डालने का भी ऑप्शन है। फिर हम आते हैं उस लिस्ट पे कौन कौन से लोग हैं जो ये देख सकते हैं। ये है पब्लिश टू कम्युनिटी, मतलब मैं जो भी बना रहा हूँ वो फिग्मा की ओपन कम्युनिटी पे भी दिखेगा। एंड यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हो। और फाइनली शेयर करने के लिए आपके पास ये कॉपी लिंक का ऑप्शन है। अब आते हैं हम थोड़े से टेक्निकल पार्ट में जो है हमारी डोमेन सेटिंग्स। जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट बन जाए तो आपको पब्लिश पे जाना है और यहाँ पे आपका एक बेसिक टाइटल होगा। जो टाइटल वो चीज़ होती है जो आपकी वेबसाइट में आती है। तो जब मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ अंश मेहरा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लू चीज़ है जो हवर करते ही अंडरलाइन आती है ये मेरे वेबसाइट का टाइटल होता है। ये जो आप कंटेंट देख रहे हो ये सारा डिस्क्रिप्शन होता है और इन सब चीजों को मेटा डेटा भी बोलते हैं। मेटा डेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारा डेटा अंदर हिडन है। ये हमारी ही वेबसाइट को डिफाइन करने का डेटा है। और जिस भी चीज में मेटा आ जाता है, मेटा मतलब अंदरूनी, मेरे बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फीचर ऑन कम्युनिटी बाय डिफॉल्ट ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो बाकी लोग भी देख पाएंगे। और यहाँ अगर मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो विद इन 30 to 40 सेकेंड्स में ये जो मेरा यूआरएल है जो अभी example.figma साइट दिखा रहा है वहां पे एक नया यूआरएल बन जाएगा, एक डमी यूआरएल बन जाएगा और यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा पब्लिश्ड का। और फिर नीचे आपको वो दिखाएगा कि इसमें आखिरी चेंजेस कब हुए थे। तो जैसे अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूं अब बिना किसी कोडिंग के मेरा प्रोटोटाइप अब क्लाउड पे पब्लिश हो चुका है। अब बात आती है सेटिंग्स की। अगर मैं यहाँ सेटिंग्स पैनल में जाऊं तो यहाँ जनरल में सबसे पहले तो आपका टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है और फिर लैंग्वेज है जो मोस्ट केसेस में आपका इंग्लिश ही होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक आईएसओ लैंग्वेज कोड होता है। आप जिस भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, अगर आप हिंदी में भी वेबसाइट बना रहे हो तो आपको उसमें हिंदी का आईएसओ लैंग्वेज कोड डालना होगा। तो अगर मैं टाइप करूँ हिंदी आईएसओ लैंग्वेज कोड तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि HI इसका लैंग्वेज कोड है। तो उससे क्या होता है कि एसईओ में आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप किया हुआ है और आप देखना चाहते हो कि कौन लोग आपकी वेबसाइट खोल रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो। इमेजेस में आए तो यहाँ पे फैव आइकन है। फैव आइकन वो फोटो होती है जब आप गूगल पे अगर कुछ सर्च करो तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आता है, इसी चीज को फैव आइकन बोलते हैं। यहाँ अगर मैं पीछे आऊँ तो सोशल शेयरिंग इमेज है। जब आप लिंक्डइन पे या फेसबुक पे कुछ शेयर करते हो तो आपको वो इमेज दिखता है प्रीव्यू का, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये सारी इमेजेस आप फिग्मा पे भी बना सकते हो। और ये कस्टम कोड का ऑप्शन है, जो लोग डेवलपर्स हैं वो यहाँ पे कस्टम कोड डाल सकते हैं। अगर डोमेन सेटिंग्स की बात की जाए, अगर आप एडिट डोमेन में जाओ तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो। वरना अगर आपको अपना खुद का डोमेन कनेक्ट करना है तो ये एक सेपरेट वीडियो बन सकता है इस पूरे कॉन्सेप्ट पे। क्योंकि अगर आप GoDaddy यूज कर रहे हो, स्क्वायरस्पेस यूज कर रहे हो
हो तो उसमें एक अलग ही प्रोसेस है। तो अगर आप लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा, जहाँ पे वो आपको समझा पाएगा कि ये डोमेन कनेक्शंस करने कैसे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स कहीं पे अभी अगर आप अटकते हो तो आप इजीली चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। तो हमने साइट जनरल सेटिंग समझ लिया, हमने बेसिक कोड भी समझ लिया। हाँ, प्रीव्यू और कोड का टॉगल। तो अगर मेरा जैसे फाइल मैंने गलती से क्लोज कर दिया है तो एक बारी मैं बैक टू फाइल्स जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं रिसेंट्स पे जाऊँ एंड देन टू डू लिस्ट एप्लीकेशन पे टाइप करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है और कोड आ रहा है। तो कोड वो सारा कोड है जो इधर मेरे प्रीव्यू के पीछे चल रहा है। कोड व्यू में जाने के लिए आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो, स्टाइल्स पे क्लिक करते हो, तो आप देख सकते हो कि आपके सारे के स्टाइल्स एक साथ है। इनफैक्ट अगर आप कोई चेंजेस यहाँ करते हो तो वो आपकी मेन वेबसाइट में भी दिखेंगे। ये जो गाइडलाइंस वाला फाइल है, ये आप एमडी देख रहे हो, इस एमडी का मतलब है मार्कडाउन, और मार्कडाउन इज लिटरली अ वे ऑफ राइटिंग थिंग्स। तो ये जो आप हैश देख रहे हो, हैश का मतलब होता है हेडिंग। अगर दो हैश डालो तो छोटा हेडिंग, बट एक हैश डालो तो सबसे बड़ा हेडिंग। आप देख सकते हो कि दो हैश इज सब हेडिंग, तीसरा हैश इज सब हेडिंग का भी सब हेडिंग। तो ये डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंट्स बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में डिजाइन सिस्टम बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, बट डिजाइन सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइन सिस्टम का एडॉप्शन और डिजाइन सिस्टम को अप्लाई करना, इन सब चीजों की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। बिकॉज मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा है कि अरे मैं तो फटाफट से डिजाइन सिस्टम बनाना सीख लेता हूँ, मैं तो फटाफट से यूआई बनाना सीख लेता हूँ। स्टूडेंट्स, किसी भी स्किल का ना एग्जीक्यूशन बहुत इजी होने वाला है। तो हमने ये टॉपिक पहले भी बहुत बारी डिस्कस करा है, बट जो लोग यहाँ पहली बार ही आए हैं, मैं उनको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि डिजाइन हो, राइटिंग हो, एडिटिंग हो, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में तीन कंपोनेंट्स होते हैं आपके स्किल के। एक होता है व्हाट, कि आप क्या कर रहे हो। एक होता है हाउ, कि आप किसी चीज को कैसे कर रहे हो। और जो तीसरा कंपोनेंट होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी कंपोनेंट होता है, वो होता है क्यों, कि भाई साहब हमको ये करना ही क्यों है। तो अगर आज आप एक वेबसाइट बनाते हो, जैसे ये लर्न यूआई यूएक्स, हमने खुद एक टेम्पलेट को एडिट करा है, मैन्युअली एडिट करा है। अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि ये वेबसाइट बना दो, तो ऑफ कोर्स आप फिग्मा मेक में मेरा स्क्रीनशॉट डालोगे और उसको कॉपी कर लोगे। बट अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि व्हाई हैव यू मेड दिस इन वे, तो उसका आंसर आप पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे से पूछता है कि अंश आपने ये वेबसाइट ऐसा क्यों बनाया है, क्या बनाया है और कैसे बनाया है, वो तो एआई समझा देगा। क्यों बनाया है, वो सवाल में बहुत ज्यादा गहराई होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसका डिजाइन विदाउट एनी एनिमेशंस, विदाउट एनी इमेजेस इसलिए बनाया है कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी स्टूडेंट लो इंटरनेट स्पीड पे भी ये वेबसाइट एक्सेस कर रहा हो तो उसके लिए वेबसाइट जल्दी लोड हो जाए। दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा ये अपने फोन पे यूज कर रहा हो तो हमारे को रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स देखना चाहता है तो इजीली वो स्किम हो जाए। लिटरली बस यही लॉजिक था, और हमने पूरा इंस्पिरेशन एक टेम्पलेट से लिया था और नोशन से लिया था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दिस हैड टू बी मोर लाइक अ सिलेबस शीट एज कंपेयर टू अ कोर्स। और यहाँ पे हमने कभी भी वेबसाइट पे अपना डेटा भी नहीं डाला। दीज आर ऑल इम्बेड्स। इम्बेड्स क्यों? सो दैट हमारा होस्टिंग का कॉस्ट बच जाए। तो अभी जो मैंने आपको आंसर्स दिए ना, वो सारे आंसर्स वाई के थे, हाउ और व्हाट के नहीं थे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझ पाओ कि एक डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिखते हैं और अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो अभी मैंने आपको प्रीव्यू पैनल समझा दिया है। अब आते हैं मॉड्यूल 2 पर, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड अटैचिंग द फाइल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेमो में आपको दे ही चुका हूं, बट एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि अगर आप कोई भी इमेज डालते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्टेक्स्ट देना कि ये इमेज क्या है, इसमें कौन कौन से इंटरैक्शंस होने हैं और किस तरीके से इसको बिल्ड करना है। अब आप सोच रहे होगे कि अंश, क्या फिग्मा ने अपना खुद का ही एआई बना दिया है? तो नहीं, फिग्मा में एक क्लॉड का सोनेट 4 मॉडल यूज कर रही है। क्लॉड, जस्ट लाइक चैट जीपीटी, एक एआई ऐप है। क्लॉड को बनाने वाली कंपनी का नाम एंथ्रोपिक है। तो एंथ्रोपिक ने क्लॉड बनाया है। क्लॉड एक आपका एआई ऐप है। क्लॉड के अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारे अलग अलग एलएलएम्स हैं। एलएलएम्स मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और एलएलएम क्या होता है ये हमने अपनी एआई वीडियोस में बताया हुआ है, मैं ज्यादा डेप्थ में यहां जाऊंगा नहीं, बट मोटा मोटा आपको ये समझना है कि क्लॉड के अंदर भी ना अलग अलग एलएलएम्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग एआईज एग्जिस्ट करते हैं, और हर एलएलएम का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे एक कंपनी में एक सर्टन पर्सन का सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और वो एक इंसान एक स्पेसिफिक चीज में अच्छा होता है, बाकियों में इतना अच्छा नहीं होता। सिमिलरली क्लॉड में भी आपका सोनेट 4 स्पेसिफिकली प्रोटोटाइप डेवलप करने में बेटर है।
और इसीलिए फिग्मा मेक ने क्लॉड सोनेट 4 को यूज किया है। अब जब बात आती है प्रॉम्प्ट लिखने की, तो प्रॉम्प्टिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कॉन्टेक्स्ट लिखना। और ये एक और पॉइंट मैं फिर से रिवाइज करवा दूं जो यहाँ पे पहली बार आए हैं, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बनने वाली है। क्योंकि पहले लोग क्या बोलते थे कि प्रॉम्प्ट लिखने के ये 10 चेकलिस्ट है। अब स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज का चेकलिस्ट बन चुका है तो एआई तो चेकलिस्ट पढ़ के चेकलिस्ट को ही फॉलो कर लेगा ना। तो अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बन जाएगी, जहां पे आपका ड्यूटी होगा कॉन्टेक्स्ट समझना। और क्योंकि डिजाइनर का जॉब बहुत ही कॉन्टेक्चुअल होता है, क्योंकि डिजाइनर को पीएम से बात करना है, कस्टमर से बात करना है, बिजनेस गोल्स को अलाइन करना है, इतना सारा कॉन्टेक्स्ट होता है कि डिजाइनर का काफी सारा टाइम कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में ही जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट लिखने की, तो प्लीज इस बात को समझ लो कि जितना डिटेल में अपने प्रोडक्ट को और विजन को डिस्क्राइब करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो अगर मेरे को एक प्रॉम्प्ट बनाना है तो ये है एक खराब प्रॉम्प्ट, बट ये है एक अच्छा प्रॉम्प्ट जहां पे आप बता रहे हो कि उसका इंटरफेस कैसा है, इलस्ट्रेशंस कैसी है, लेआउट कैसा है, किस तरीके का सेरिफ फॉन्ट है। और अगर आपको एक सिंपल सा मैं चेकलिस्ट दूं कि भाई ये तो कॉन्टेक्स्ट में डालना ही है, अब ये कॉन्टेक्स्ट चेकलिस्ट है, ये प्रॉम्प्ट चेकलिस्ट नहीं है, अब मैं इसको कॉन्टेक्स्ट चेकलिस्ट बोलूंगा। आपको सबसे पहले तो डिस्क्राइब करना है कि इमेज कर क्या रही है। अगर ये कोई स्पेसिफिक फीचर्स बता रही है तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। अगर कोई एलिमेंट्स है जो आपको ऐड करने हैं, जैसे कि आपने बोला कि भाई ये अकॉर्डियन है, पता चला आपके यूआई में वो ड्रॉप डाउन लग रहा है, आपको स्पेसिफाई करना है कि ये अकॉर्डियन है। फिर कॉम्पोजिशन आपको स्पेसिफाई करना है कि पहले हेडिंग आएगा, फिर नीचे ये आएगा, फिर वो आएगा। एंड कॉम्पोजिशन तब काम आता है जब आपके पास कोई इमेज ना हो। फिर टाइपोग्राफी, सेरिफ फॉन्ट यूज करना है, 100 सेरिफ फॉन्ट यूज करना है, कितने तरीके के साइजेस यूज करने हैं, और फिर एंड में आ गया आपका कलर। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज मेक श्योर कि आप डिजाइन टर्मिनोलॉजी को फॉलो करो। एंड अगर आपका वोकैबुलरी वीक है तो प्लीज ये वीक 2 का कोर्स और ये वीक 3 का कोर्स प्लीज खत्म कर लेना, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अटैचिंग फाइल्स मैं आपको दिखा ही चुका हूं कि अगर आप यहाँ पे जाते हो और अटैच फाइल्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट एनी लाइब्रेरी यू वांट। अगर मैं यहाँ प्लस पे जाता हूँ और इम्पोर्ट फिग्मा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास कम्युनिटी का सारा एक्सेस है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल ऐप और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कितने सारे डिजाइन्स को इजीली अटैच कर सकता हूँ। तो दैट इज ऑल्सो अ क्विक हेल्पफुल फीचर। अपलोडिंग इमेज मैं आपको बता चुका हूँ, डिजाइन कम्युनिटी में मैं आपको बता चुका हूँ, इमेज अपलोड करना भी आपको बता चुका हूँ। एक चीज है कि हमेशा सिंगल अटैचमेंट में आपको काम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार ये फोटो डाल दूं और मैं इसको एक बार अटैच फाइल्स पे करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 अलग अलग फाइल्स आ रही है। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोशिश करो कि एक ही इमेज डालो और धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करो, क्योंकि आपको हर एक सेक्शन को एक एक करके बिल्ड करने की नीड है। अगर आप मल्टीपल अटैचमेंट्स डालते भी हो तो आपको पहले पूरा का पूरा स्क्रीन एक बार ही में फिक्स करना चाहिए एंड देन आगे जाके दूसरे पे अप्रोच करना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा आपके लिए क्योटिक हो जाएगा। डिजाइन फ्रेम्स को कॉपी करना आपको आता ही है। मैं किसी भी फ्रेम पे जाके अगर यहाँ राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे कॉपी करूँ तो वहां इजिली जाके वो पेस्ट हो जाएगा। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम, अगर आपके यूआई में कुछ भी टेक्स्ट आता है तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट एंड सेलेक्ट पे अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा टाइप फेस है, मेरे कलर्स है, मेरा फॉन्ट साइज है और मेरी सारी वही सेम प्रॉपर्टीज है जो ऑलमोस्ट एक डॉक्यूमेंट एडिटिंग टूल में होती है। अदर प्रॉपर्टीज का मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखा चुका हूं और ये स्लाइड्स बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि आप फिग्मा कम्युनिटी पे जाके इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर पाओ और अपने नोट्स बना पाओ। ये जो लेक्चर 1 है ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ फिग्मा मेक का एक वॉक थ्रू है। पहले मैं आपको टूल इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। अगले लेक्चर में हम एक्चुअली में एक बिल्ड करेंगे, हम प्रॉपर एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे, एक प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे जहां से आपको समझ आए कि फिग्मा मेक को यूज कैसे करना है। तो अभी फिग्मा मेक क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगले एपिसोड में फिग्मा मेक में बनाना क्या है हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। अब मॉड्यूल 3 की अगर बात की जाए, जो स्टाइल वाली बात है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक लाइब्रेरी उठानी है, अगर आपको स्टाइल उठाना है, एक स्पेसिफिक कलर पैलेट उठाना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो जो स्टाइल्स आपके इस लाइब्रेरी के अंदर होंगे वो ही स्टाइल्स यूज किए जाएंगे आपके फाइनल प्रोटोटाइप में। अब हाँ, अगर आपको स्टाइल का नाम भी देखना है तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका इधर होगा इस CSS फाइल में। तो ये ऑटोमेटिकली आपके फिग्मा फाइल से ही उन सारे नामों को अडॉप्ट करेगा। अब अगर आपको समझना है कि ये किट पब्लिश भी कैसे होता है, क्योंकि आपका तो फिग्मा फाइल अलग जगह है, तो ये मेक में यहां दिख क्यों नहीं रहा, ये सिर्फ 2 फाइल्स क्यों दिख रही है,
तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को लाइब्रेरीज तो पता ही होगी। आपने बस लाइब्रेरी में जाके जब आप एसेट्स पैनल में जाओगे और आपने बस उसको पब्लिश करना है, पब्लिश करते हुए नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, ड्रॉप डाउन भी नहीं, एक एक्स्ट्रा आपको एक मोडाल दिखेगा जो बोलेगा एक्सपोर्ट टू फिग्मा मेक। अब क्योंकि मैं लाइब्रेरीज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो इट मेक्स नो सेंस कि मैं फिर से समझाऊं कि लाइब्रेरीज क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता है लाइब्रेरीज क्या है तो ये एपिसोड आपको पूरा एंड टू एंड देखना पड़ेगा, इससे आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। बट हाँ, ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका लाइब्रेरी इधर तभी दिखेगा जब आप अपनी फिग्मा फाइल में जाके उसको एक्सपोर्ट टू फिग्मा मेक करोगे। अब अगर आपने कोई लाइब्रेरी पकड़ी, जैसे मैंने iOS 16 की पकड़ी और मैंने यहाँ पे रीराइट कर दिया स्टाइल्स को, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अभी यूज नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एडिट स्टाइल्स पे जाके आप इस लाइब्रेरी के अंदर भी चेंजेस कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस भी एडिट कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि आपने iOS 16 पकड़ो बट आपको फॉन्ट चेंज करने हो, तो वो सारी चीजें भी आप ओवरराइड कर सकते हो। तो हमने एडिट गाइडलाइंस भी समझ लिया है। अब हम आते हैं बैक एंड फंक्शनैलिटी पे, जो काफी सारे डिजाइनर्स के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि ये बैक एंड होता ही क्या है। स्टूडेंट्स, जब आप मेरी वेबसाइट पे जाते हो, लर्न यूआई यूएक्स पे जाते हो, या अगर मैं आपको कटिंग एज स्कूल का वेबसाइट दिखाऊं, तो जो भी चीजें आपको अपने सामने दिख रही है ना, ये लोगोज, ये टेक्स्ट, ये फोटो, ये वो चीजें हैं जो विजिबल है, आंखों के सामने दिख रही है। और इस पार्ट को, जो आपको सब कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। बट अगर मैं यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे जाऊं और यहाँ पे अपना एक फॉर्म भरूं, तो ये डेटा कहीं तो जा रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये बाहर बाहर ही रह रहा है। कहीं पर तो ये सबमिट हो रहा है और कहीं पर ये सेव भी हो रहा है। तो किसी भी वेबसाइट को फंक्शनल बनाने के लिए आपको सिर्फ फ्रंट एंड नहीं, बट आपको बैक एंड की भी जरूरत होती है, जहां से ये सारा डेटा फेच हो रहा हो। अब क्वेश्चन ये है कि फिग्मा में तो सिर्फ फ्रंट एंड बना रहा है, तो अगर हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मॉकअप बनाते हैं तो उसका डेटा जा कहाँ रहा है। अब यहाँ एंट्री होती है सुपाबेस की। अब सुपाबेस क्या है? सुपाबेस एक ओपन सोर्स बैकएंड प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स मतलब दैट आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं। और ये जो बैकएंड प्लेटफॉर्म है, ये आपके प्रोटोटाइप को, जो आप फिग्मा मेक से बना रहे हो, उसको डेटाबेस का ऑप्शन दे सकता है। अगर आपने कोई अकाउंट क्रिएशन का फ्लो बनाया है तो उसमें ऑथेंटिकेशन का फीचर डाल सकता है। अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन प्लान या पेमेंट गेटवे डाल रहे हो तो रियल टाइम सब्सक्रिप्शंस बनाने में हेल्प कर सकता है। अगर आप अपने प्रोटोटाइप में किसी से इमेज अपलोड करवा रहे हो तो फाइल स्टोरेज करवा सकता है। मतलब ढेर सारी चीजें हैं जो सुपरबेस आपके लिए कर सकता है। अब जरा एक फंक्शनल फ्लो समझते हैं, एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जैसे कस्टमर जर्नी होता है वो समझते हैं। कि अगर मैं एक अकाउंट क्रिएशन फ्लो बना रहा हूं तो यूजर क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा। क्रेडेंशियल्स मतलब अकाउंट का आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड। अब फिग्मा मेक ने तो सिर्फ फ्रंट एंड बनाया है, तो अब ये चेक कौन कर रहा है भाई कि ये अकाउंट और पासवर्ड एक साथ है भी या नहीं। तो फिर मेरा फिग्मा मेक सुपरबेस पे जाएगा, सुपरबेस में कॉल करेगा कि मुझे बताओ क्रेडेंशियल्स आए या नहीं आए, और सुपरबेस रिस्पॉन्सिबल होगा बताने के लिए कि अगर इनवैलिड है तो क्रेडेंशियल्स नॉट फाउंड आएगा, और अगर क्रेडेंशियल्स मैच कर रहे हैं तो मैं सक्सेसफुली लॉग इन करवाऊंगा। तो अब सुपरबेस को फिग्मा में डालते कैसे है? तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स पैनल में जाना है और वहां पे सुपरबेस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, मैं सुपरबेस को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा सुपरबेस ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपके केस में आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा supabase.com पे जाके, और जब आप इस पे कनेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका फिग्मा मेक अकाउंट आपके सुपरबेस अकाउंट से मैच कर जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही इजी है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट आएंगे, मैं कर चुका हूं इसलिए मैं उसको बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट सुपरबेस दिखेगा। सुपरबेस में आपको साइन अप करना है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ईमेल आईडी पासवर्ड से करो। फिर आपको एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद आपको उसका एक नेम सेट करना है एंड प्लान में आपको फ्री प्लान यूज करना है। फिर आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे ही आप नया प्रोजेक्ट बना लोगे, वहां पे मेक श्योर कि आपका रीजन सही हो। अगर रीजन गलत हुआ तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। और एक डेटाबेस पासवर्ड सेट करना और इसको कहीं लिख लेना, कहीं इसको आप भूल ना जाओ। अब जब आप प्रॉम्प्ट एंटर करोगे तो अब आपको लेफ्ट साइड पे वो इस तरीके से चैट में दिखाता है। जब आप पहली बार यूज करते हो, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे, मैं जैसे यहाँ पे टू डू लिस्ट एप्लीकेशन में जाता हूं, तो लेफ्ट साइड पे आपको आएगा सेटअप योर अकाउंट, और जब आप उसको कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका एक विंडो खुलेगा जहां पे वो बोलेगा कि फिग्मा चाहता है कि वो सुपरबेस को एक्सेस कर पाए, और आपने बस ऑथराइज करना है फिग्मा को। फिर वो बोलेगा कि चलो ठीक है, सुपरबेस का अकाउंट तो कनेक्ट हो गया, अब आपको एक सुपरबेस का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है।
उसको सिलेक्ट करने के लिए आपने जो सुपरबेस में यहाँ प्रोजेक्ट बनाया था ना, डैशबोर्ड में जाके इधर पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाओगे, वो प्रोजेक्ट बस आपने सिलेक्ट करना है। जैसे ही वो सिलेक्ट होगा सारी की सारी चीजें सॉर्ट हो जाएगी। अब क्योंकि ये वीडियो सुपरबेस पे नहीं है, फिग्मा मेक पे है, इसीलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दे दिया है, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और मेरा खुद भी ये मानना है कि अब मुझे थोड़ा आपके लिए ना स्पून फीडिंग कम करना है। मेरा ड्यूटी है आपको बताना कि सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे ये काम करता है और आपको कहाँ जाना है। बट प्लीज अपने ब्रेन में ये लेजीनेस मत डालो कि अरे अंश मुझे सब बिल्कुल हाथ पकड़ के जब तक दिखाएगा तब तक मैं नहीं करूंगा, वो नहीं करना है। तो मैंने अब आपको बता दिया है क्या करना है, कैसे करना है, स्क्रीनशॉट्स भी डाल दिए हैं। अब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको खुद फिगर आउट करो। एंड याद है ना मैंने आपको क्या टिप दिया था कि कहीं पर भी अगर आप अटकते हो, सिंपली एक स्क्रीनशॉट डालो, चैट जीपीटी पे बोलो कि भाई मेरे से ये हो नहीं रहा है, मुझे प्लीज हेल्प कर दे। अब बात आती है पब्लिशिंग की और प्रीव्यूइंग की। तो यहाँ पे मैंने फिर से नोट्स बना दिए हैं कि अगर आप प्ले बटन पे क्लिक करते हो तो एक फुल स्क्रीन व्यू आता है। अगर आपको एक प्रोटोटाइप पब्लिश करना है इंटरनेट पे तो आप उसको पब्लिश करके किसी के साथ भी वो लिंक शेयर कर सकते हो। आगे जाके आप उसमें अपना खुद का नाम .figma.site कर सकते हो, वरना अपना पर्सनल डोमेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। जनरल प्रोजेक्ट सेटिंग्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, फैव आइकन और सोशल आइकन भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब आते हैं फिग्मा मेक की कम्युनिटी पे। अगर मैं यहाँ पीछे आऊँ एंड बैक टू फाइल्स करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्पलेट्स एंड टूल्स में जाके अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो इजी टू यूज़ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अब फिग्मा कम्युनिटी और मार्केट प्लेस ऐसा दिखने लग गया है। तो अगर मैं यहाँ फिग्मा मेक पे सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ वो टेम्पलेट्स मुझे दिखेंगे जो फिग्मा मेक के लिए बने हुए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट FAQs। आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये जो मेरा प्रोटोटाइप है ये किधर होस्ट हो रहा है, तो दे आर होस्टिंग दिस ऑन Amazon वेब सर्विसेज, और जो रूटिंग है डोमेन की वो क्लाउडफेयर से हो रही है। क्या ये SEO सपोर्टेड है? तो फिग्मा में एक ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट्स का SEO ऑप्टिमाइज कर देता है, बट स्पेसिफिक SEO ऑप्टिमाइजेशन अभी भी अलाउड नहीं है। विल आई बी चार्ज्ड सेपरेटली फॉर होस्टिंग? नहीं। तो अभी फिग्मा में एक बीटा से भी हट चुका है, तो मैं एक बारी इसको जरा डिलीट कर दूं कि जो आपका होस्टिंग है वो पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग पेड प्लान है। जो आपका फिग्मा मेक का फ्री प्लान है उसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस के बारे में अगर आपने पढ़ना है तो आप फिग्मा मेक अगर प्राइसिंग लिखोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था एक क्विक ओवरव्यू कि भाई फिग्मा मेक है ही क्या और ये जो पूरा का पूरा आपका सॉफ्टवेयर है ये कैसे सेटअप होता है। बट अभी तक हमने कुछ खास बनाया नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप इन चीज के नोट्स लो और समझो, अपना फिग्मा मेक का अकाउंट बनाओ एंड नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ इफ यू वांट अस टू मेक लेक्चर नंबर 2। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसी वीडियोस बनाने में हमारा बहुत एफर्ट जाता है, बहुत टाइम जाता है, एंड अगर आप लोग हमारी वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो हम ज़्यादा कंटेंट नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के नोट्स लिंक्डइन पे डालोगे और हमारा वीडियो शेयर करोगे, जिससे कम्युनिटी में सबको पता चले कि हम सबको फिग्मा मेक AI हिंदी में पढ़ा रहे हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो इतनी डिटेल में जाके हर एक फिग्मा के टूल को हिंदी में भी पढ़ा रहा हो और इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हो, इसलिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। तो ये पूरा का पूरा स्लाइड मैं फ्री में फिग्मा कम्युनिटी पे डाल दूंगा, जिससे आप इसको खुद भी डाउनलोड कर पाओ। ये तो सिर्फ एपिसोड 1 था। अगले एपिसोड में हम एक रियल क्लाइंट ब्रीफ को लेकर फिग्मा मेक को यूज करके एक प्रॉपर वेब ऐप बनाएंगे एंड टू एंड। अब इस फिग्मा कोर्स के हर एपिसोड को टाइम से देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलना। आई होप दैट यू टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। दिस इज योर दोस्त अंश मेहरा एंड आप सीख रहे हैं फ्रॉम द कटिंग एज स्कूल।